Now it's second part of Ch-1. The Preamble 1.1. Notes. The Preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document. भारतीय संविधान का प्रस्तावना एक संक्षेपात्मक प्रस्ताव है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को स्थापित करता है. The hopes and aspirations of the people, as well as the ideals before our nation, are described in the preamble in clear-cut words. लोगों की आशाएं और उम्मीदें, साथ ही हमारे राष्ट्र के सामने रखे गए आदर्शों को प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में वर्णित किए गए हैं. It may be considered as the soul of the Constitution. The preamble can be referred to as the preface which highlights the essence of the entire Constitution. इसे संविधान की आत्मा के रूप में माना जा सकता है. प्रस्तावना को पूरे संविधान की सार को हाईलाइट करने वाले प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया जा सकता है. It was adopted on the 26th of November 1949 by the Constituent Assembly. इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था. These are the opening words of the preamble to the Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं. हम, भारत के लोग, ने याचना की है कि हम भारत को एक संप्रभु समाजवादी धार्मिक लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थापित करें और सभी नागरिकों को सुरक्षित करें. The preamble reflects the philosophy as well as fundamental values of the Indian Constitution. प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन और मौलिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है. It clarifies 4 important aspects. ये 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है. A. It states the date of adoption, i.e., the 26th of November 1949. इसमें स्वीकृति की तारीख बताई गई है, अर्थात 26 नवंबर 1949. B. It declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and a republic. ये घोषणा करता है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धार्मिक, लोकतांत्रिक और गणराज्य है. C. It mentions that the Constitution derives its authority from the people of India. यह उल्लेख करता है कि संविधान का अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होता है. D. It clarifies the objectives of the Constitution are justice, liberty, equality and fraternity. ये स्पष्ट करता है कि संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है. The enacting words, we, the people of India, in a constituent assembly, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, signify the democratic principle that power is ultimately rested in the hands of the people. निर्माण शब्द, हम, भारत की जनता, हमारी संविधान सभा में, यहाँ द्वारा स्वीकृत, अधिनियमित और हमें इस संविधान को देना, ये लक्षण करते हैं कि लोकतंत्र सिद्धांत है कि शक्ति अंत में लोगों के हाथों में अवस्थित है. It also emphasizes that the Constitution is made by and for the Indian people and not given to them by any outside power, such as the British Parliament. इसे ये भी जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया है और उनके लिए है, और इसे किसी बाहरी शक्ति, जैसे कि ब्रिटिश संसद, द्वारा नहीं दिया गया है. The phrase, we the people, emphasizes the concept of popular sovereignty as laid down by J.J. Rousseau. All the power emanates from the people, and the political system will be accountable and responsible to the people. हम लोग शब्दांश ने J.J. रूसो द्वारा निर्धारित लोक प्रभुता की अवधारणा को जोड़ दिया है. सभी शक्ति जनता से उत्पन्न होती है और राजनीतिक प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार रहेगी. I, democratic. I, लोकतांत्रिक. The first part of the preamble, we, the people of India, and its last part, give to ourselves this constitution, clearly indicate the democratic spirit involved even in the Constitution. India is a democracy. The people of India elect their governments at all levels, union, state and local, by a system of universal adult franchise, popularly known as one man one vote. भारत एक लोकतंत्र है. भारत के लोग अपनी सरकारें सभी स्तरों पर, केंद्र, राज्य और स्थानीय, का चयन व्यापक पूर्ण वयस्क चयन तंत्र द्वारा करते हैं, जिसे एक व्यक्ति एक वोट के रूप में सामान्यतः जाना जाता है. Every citizen of India, who is 18 years of age and above and not otherwise debarred by law, is entitled to vote. Every citizen enjoys this right without any discrimination on the basis of caste, creed, color, sex, religious intolerance or education. हर भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु है और कानून द्वारा अन्यथा बाधित नहीं है,
को मतदान का हक है। हर नागरिक इस अधिकार का उपयोग जाति, धर्म, रंग, लिंग, धार्मिक असहिष्णुता या शिक्षा के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना कर सकता है। The word democratic not only refers to political but also to social and economic democracy. शब्द लोकतांत्रिक सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी संदर्भ है। Republic, गणराज्य, as opposed to a monarchy in which the head of state is appointed on a hereditary basis for a lifetime or until he abdicates from the throne. A democratic republic is an entity in which the head of state is elected, directly or indirectly, for a fixed tenure. The President of India is elected by an electoral college for a term of 5 years. The post of the President of India is not hereditary. भारत के राष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की पद स्थायी नहीं है। Every citizen of India is eligible to become the president of the country. The leader of the state is elected by the people. हर भारतीय नागरिक देश के राष्ट्रपति बनने के योग्य है। राज्य के नेता को लोगों द्वारा चुना जाता है। Socialist, समाजवादी. The term socialist here means democratic socialism, i.e. achievement of socialistic goals through democratic, evolutionary, and non-violent means. A mixed economy in which both public sector and private sector run together as two wheels of economic development. एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों आर्थिक विकास के दो पहिए के रूप में साथ में चलते हैं। Secular, धर्मनिरपेक्ष. Secular means the relationship between the government and the people which is determined according to the constitution and law. By the 42nd Amendment, the term secular was also incorporated in the Preamble. Secularism is the basic structure of the Indian Constitution. 42वां संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तुत भी किया गया था। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मौलिक संरचना है। The government respects all religions. It does not uplift or degrade any particular religion. There is no such thing as a state religion for India. सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। वो किसी विशेष धर्म को उच्च या कम करती नहीं है। भारत के लिए राज्य धर्म का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। In S.R. Bommai v. S.U.O.I. 1994, the Supreme Court of India held, a state which does not recognize any religion as the state religion. It treats all religions equally. S.R. Bommai v. S.U.O.I. 1994 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा राज्य जो किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकृत नहीं करता है, वो सभी धर्मों के साथ बराबरी से व्यवहार करता है। Positively, Indian secularism guarantees equal freedom to all religions. It stands for the right to freedom of religion for all citizens. सकारात्मक रूप से भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देती है। ये सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। Explaining the meaning of secularism as adopted by India, Alexander Ovitz has written, secularism is a part of the basics of the Indian Constitution and it means equal freedom and respect for all religions. भारत द्वारा अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एलेक्जेंडर ओविक्स ने लिखा है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसका अर्थ सभी धर्मों के लिए समान स्वतंत्रता और सम्मान है। Sovereign, संप्रभु. The word sovereign means supreme or independence. India is internally and externally sovereign, externally free from the control of any foreign power, and internally, it has a free government directly elected by the people. The popular sovereignty is also one of the basic structures of the Constitution of India. Hence, citizens of India also enjoy sovereign power to elect their representatives in elections held for parliament, state legislature, and local bodies. लोकप्रभुता संविधान की मौलिक संरचनाओं में से एक भी है। इसलिए भारत के नागरिक भी संसद, राज्य विधायिका और स्थानीय निकायों के लिए होने वाले चुनावों में अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का संप्रभु अधिकार है। Justice. न्याय. The term justice in the preamble refers to three varying aspects: political, social, and economic, which are secured through different provisions of fundamental rights and directive principles of state policy. Liberty. Swatantrata. The ideal of liberty refers to the freedom of the activities of Indian nationals. This is found to be an important tool in ensuring a democratic framework. All citizens are secured with liberty of thought, expression, belief, faith, and worship through the fundamental rights, which are justiciable in nature. However, liberty does not mean freedom to do anything, and it must be exercised within the constitutional limits.
सभी नागरिकों को मुक्तिपूर्णता की आदर्श से यह सुनिश्चित है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता बनी रहे, जो न्यायिक स्वरूप में है। हालांकि स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है और इसे संविधानीय सीमाओं के भीतर बाहर किया जाना चाहिए। We, fraternity. We, बंधुत्व. This refers to a feeling of brotherhood and a sense of belonging with the country among its people. It embraces psychological as well as territorial dimensions of national integration. It leaves no room for regionalism, communalism, casteism, etc., which hinders the unity of the state. इसमें क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि के लिए कोई स्थान नहीं है, जो राज्य की एकता में बाधा डालता है। X, equality. X, समानता. This envisages that no section of society enjoys special privileges, and individuals are provided with adequate opportunities without any discrimination. Again, there are three dimensions of equality: political, economic, and civic. ये दृष्टिकोण रखता है कि समाज का कोई भी वर्ग विशेष विशेषाधिकार हटाता नहीं है और व्यक्तियों को किसी भी भेदभाव के बिना पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। फिर भी समानता के तीन पहलुओं राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक होते हैं। X, amenability. X, सामर्थ्य. It has been clarified by the Supreme Court of India that being a part of the Constitution, the preamble can be subjected to constitutional amendments exercised under Article 368. However, the basic structure cannot be altered. इसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान का हिस्सा होने के बावजूद प्रस्तावना को संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया जा सकता है, जो धारा 368 के अधीन किया जाता है। हालांकि मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता है। Next we will do in next chapter. Thank you. Stay tuned on Pulse YT.